Okay, hello everyone. Welcome back to IIT Point. So see here, यार लास्ट क्लास में व्हाट वी आर डूइंग हम लोगों ने कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस मार्क किए थे. तो एक काम करते हैं बच्चों, पहले उसका डिस्कशन फिनिश करते हैं. उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेक्शन शुरू करते हैं. क्लियर? Like till now what we have covered motion, uniform motion as well as non-uniform motion. Next question which we are about to start, that will be motion under gravity. Clear? So tell me, let's start with assignment number 2. Tell me the question number, like question number 2 and 3. Is there anyone who has problem in second and third? Voice is low. Okay, just a minute. Okay, I'm not able to understand. Ishika 3. Okay, ठीक है. Right now, guys, just let me know whether audio is clear or not. Okay, I hope so. Chaitanya, yes, Chaitanya, tell me. Okay, Siddhi is telling it's all right. Yes, sir, it's clear now. ओके मुकुल, वेरी गुड. चलो बहुत बढ़िया. चलो भाई शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 03. अच्छा पहले बताओ कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व कर लिया था? लाइक व्हिच ऑप्शन इज द राइट वन? ओके, वंस अगेन कैन यू, आई कांट सी द मैसेज. राइट हैंड साइड में कुछ पॉपअप हो गया आ रहा है बट आई एम नॉट एबल टू सी इट. ओके. Okay, yes, Aryan did not get the answer key. Okay, I will talk to Milind sir for today. 100% you will get the answer keys. Okay. Okay, Soumya is telling me like third का D part इनका आंसर आ रहा है T times under root A square plus B square. Very good, Soumya. What about rest of the students? Yes. बाकी Sir, which A question part you आ are रहा talking है. about? Sisti, what are you saying? Sir, which question you are talking about? Sheet number 2, question number 03. Ranjit, no problem at all. I can see you have the keys, and Ranjit has 3 keys. Okay. We'll see the answer. Sisti, what was your answer of question Sir, number D 03? option. D D. option. Okay. So Prajakta under root A square plus B square. Okay. Aman is telling me D option. Aryan is also telling me D option. So guys, let's verify which option is the right one. Chalo, ठीक है. Very good. Nilaksha. 21 2t under root A square plus B square. Okay. So Nilaksha is also telling me like last part Nilaksha का right answer आया है. Good. Okay. Just a minute. Here's the right answer. Okay, guys, so let's focus on the sheet. I'm just looking at. Okay, Pooja is telling me D part. Where भाई कहाँ गए सारे सारे public chat किधर गए मेरी? Okay, D is the right answer. I'm just looking at the answer keys, guys. Remember what I told you. कुछ भी matter नहीं करता. बस ये matter करता है कि whether you are solving the problems or not. That's the only deal. Okay, Pooja is telling me D part, Ansh D part, Rituraj D part, and Ishwari D part. Okay, guys, very good. I can see 52 users are there. Okay, तो चलो एक काम करते हैं यार, third part देखते हैं. First, let us try to understand the question. What is the question? The question is like this: the coordinate of a moving particle at any time are given by x equals to at square and y equals to bd square. Clear? The speed of the particle at any moment. See here, guys, speed का मतलब क्या होता है? पहली चीज यहाँ पे देखो. First, let us try to understand this expression. Okay, कि x equals to the meaning of x equals to at square and x equals to bt square. And remember the आप जितने equations करेंगे आपके concept उतने ही अच्छे होते जाएंगे. So solving question are the most important criteria. Okay guys. अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो. Clear है?
दो एक्सप्रेशन अपने को दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज x equals to at square and second one is y equals to bt square. What does it mean? इसका ये कि x equals to something means particle is moving in x direction. Y equals to bt square, particle is moving in y direction. Now tell me, is it possible for a particle to move in x direction as well as y direction? पहले तो इस पर डिस्कशन कर लेते हैं. No, sir. Possible for, yes, how's that possible? No, sir. Acha, it's not possible. Aryan is telling me it's not possible. Anyone else? Is it possible to move in two directions simultaneously? So by Mukul, yes. So it is not possible at the same time. At the same time, it's not possible. Okay, anyone else? sir, it Can I move, first- we Yes. can find resultant. Resultant. Okay, Chaitanya is telling me resultant. Yes. Possible. Bhargav, yes. See here, guys. Yes, Bhargav, your answer is absolutely right. मतलब भार्गव बेटा पढ़ाई करता है तो अच्छे से. Very good. See here, guys. What is going on? Very good. Thumbs up, Bhargav. That's 100% right answer. Ranjit, it's possible. See here, guys. X और Y में move करने का मतलब क्या हुआ? Suppose करो अगर तुम किसी plane में move कर रहे हो. As you can see, this suppose this is X axis, this is Y axis. So what is this? This is the XY plane. Clear, guys? If we are assuming like this is our x-axis and this is y-axis, so this is the plane. And suppose if any person or anything is moving on this board, so its x coordinate is changing as well as y coordinate is also changing. So particle is moving two-dimensionally. Clear? So इस motion को हम क्या कहेंगे? We will call it 2D motion. Guys, first try to understand. Next, is it possible for a particle to move in three dimension? Yes, obviously it's possible. Suppose if there is a bird and the bird is flying, तो जब भी आप एयर में प्रेजेंट होते हो तो एयर का मतलब क्या हुआ भाई? अगर आप वॉक कर रहे हैं बोर्ड पे तो यार एक्स इज चेंजिंग, वाई इज चेंजिंग, बट इफ यू लीव द बोर्ड मींस यू आर फ्लाइंग इन द एयर. और एयर में बच्चों क्या होता है कि हमारे तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं. क्लियर? ओके, सो 2D मोशन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ 2D मोशन. ये किसमें हो रहा है? प्लेन में. इससे पहले क्या देखा था तुमने? द पार्टिकल वाज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन. ये हो गया 1D मोशन, straight line along x axis. But if the particle is moving on a plane, the motion is said to be, always remember, a 2D motion, and in a 2D motion x coordinate as well as y coordinate both are changing. Okay, yes, Aman, I can see you were trying to say something. Aman, Sir, let me know. Yes. Sir, I too was giving example of 3D motion. Okay, no problem. So, see here, if you are moving on a straight line, it's motion along a axis. अगर आप एक प्लेन के ऊपर मूव कर रहे हैं तो बच्चों ये क्या हो गया? मोशन इन 2D, x and y will change. But if you are flying just like an aeroplane or just like a bird, तो उस केस में क्या होगा? It's a 3D motion. Clear? And x coordinate, y coordinate, z coordinate, all the coordinates would be changing. तो यहाँ पे देखो, अगर दो डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, x equals to at square means displacement is present in x direction, y equals to bt square means displacement is present into y direction. So we have velocities in x direction as well as y direction. Whatever are the possible ways of displacement, जितने भी displacement की direction, बस सिंपल सा फंडा याद रखो, जितनी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी भी उतनी ही डायरेक्शन में होगी. तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या दिया गया था? x equals to at square. इसका मतलब अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? vf equals to dx by dt. Just look at the board. I will write down d by dt of at square. See here, guys. Further, as you can see, a is the constant. I will write down d by dt of t square. That comes out to be 2a. Okay. In the same way, velocity in y direction, that comes out to be dy by dt, which I will write down d by dt of y. Y is equals to dt square. Here, guys. तो यहाँ पे देखो, ये फंडा क्या हो जाएगा? b multiplied by d by dt of t square, which comes out to be twice. Okay, so as you can see, we have velocities in x direction as well as y direction. But always remember, जो तुम्हारे ऑप्शंस दिए गए हैं, देखो x डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई, y डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई, तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं? रिमेंबर गाइस, वेलोसिटी इज गिवन, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी.
तो v को मैं लिख सकता हूँ velocity vx I cap plus vy j cap. ये क्लियर हुआ क्या? Always remember what is velocity. Velocity is a vector quantity, तो first हमें velocity लिखनी पड़ेगी. But in the question they are asking about speed. So what is speed? Always remember speed is the magnitude of velocity. Guys, we have a simple definition, and what is that definition? Speed is basically the magnitude of velocity. So हम लोग क्या करेंगे? First we will find out velocity and then we will calculate its magnitude. Clear guys? So see here, just look at the book. So in this case, the value of velocity comes out to be, see here, what is the velocity in x direction? That is 280. Direction, I will write down I cap. What is the value of velocity in y direction? That is 2bt. Direction j cap. And what I told you, what is the meaning of speed? Speed is basically the magnitude of velocity. Clear guys? So we have velocity in vector format. So what we will do, we will calculate its magnitude. So see here, if I calculate the magnitude of velocity, what it will be? I component is 280. What was the formula? Under root I component square plus j component square. So see here, what is going on? 2t इसमें भी common है, 2t इसमें भी common है. So I can write down 2t whole square in bracket a square plus b square. So guys, what will be its answer? 2t under root a square plus b square. This is our final answer. See here guys, which option is this? I think D part. Shivani, yes. Okay, Shivani, we are talking about sheet number 2, question number 3. Shivani, see here, we are talking about sheet number 2, question number 3. Guys, just look at the board, see the solution and let me know if you have any problem. Okay, everybody? Okay, clear. Okay, if it is clear to everyone, just let me know. Okay, Ishka, thumbs up, very good, very good. Utkarsh, clear. Okay, I can see. Right now users are 57, so almost all the students are back. Anisha, very good, double thumbs up. क्या बात है भाई? यार इसको देख लो और समझ लो, ठीक है? आशुवानी बहुत ही सिंपल है. देखो हमारे पास x में भी डिस्प्लेसमेंट है, y में भी डिस्प्लेसमेंट है. It simply means we have velocity in x direction as well as y direction. तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली dx by dt. y डायरेक्शन की वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली dv by dt. फिर वेलोसिटी को हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया. In the end अपने से क्या पूछा गया था? They were asking about speed. Clear guys? Okay, very good, very good. Ranjit has given a lot of thumbs up. That's nice. Nikita clear, she is clear. और मोहम्मद आया, it's also clear. और फिर हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाला. See here guys, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट I component square plus j component square. And the value we have is 2t in bracket in root a square plus b square. Ashwani, I hope that's clear to you. Okay, clear. Completed. Aman completed. So that's very nice. Yeah, so we have completed question number 2. Now let's discuss the next one. Tell me the next one. B is the constant, Bhargav. A and B, both of them are a constant. Okay, so you done. Very good, very nice. Shivani. Okay, yes, Shivani, I am waiting. Just write it down. ASAP. Bhargav, very good. Bhargav is looking very charged today. Okay, guys, just copy it. Question number 11. Okay, Harshal is asking me. Next question is question number 11. You have already told sir that. Yes. Okay, question number 11. I think Harshal, we have already done that. Already done. Okay, 25. Okay, just let me see. 25 is simple. Just you have the expression of velocity system. Just do the differentiation and you will have acceleration. Yeah. Or you can solve it with the help of integration. देखो velocity तुम्हें दी गई है 80. Velocity को क्या लिख सकते हैं? dx by dt equals to 80. Do the integration and you will do answer. Okay, sir. So just see here guys, if you have any problem. Okay. So Shivani, just let me know whether you are done with this or not.
Okay, Chaitanya, 8. Okay, guys, just tell me which one is the next one. Prajakta. Okay, Prajakta is telling me question number 19. Remember, guys, what I am telling you continuously. क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि एग्जाम में केवल क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ध्यान रखना, कोई वगैरह नहीं आती. तो ऑलवेज ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चन एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आपके लिए उतना ही होगा. ओके, here question 19 goes like this: the acceleration a in meter per second square of a particle is given by. Okay बच्चों देखो यहाँ पे acceleration दिया गया है and they are telling us if the velocity start out with the velocity u equals to 2 meter per second at t equals to 0, then the velocity at the end of 2 seconds. Okay, how many of you solve this and tell me the answer also? Okay, everybody guys, just type it down. कितने लोग का आंसर आ गया? Just let me know. Okay, Sisti is telling me B part, Mushfiq B part. Very good, Ayan B part. Okay, almost everybody is telling me B part. So I hope B part is the right answer. Aryan is also telling me B part. That's good, means you guys are solving the questions. यार मैं तो यही सोचता था तुम लोग घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स वगैरह मतलब मूवी वगैरह देखते होगे. But it's not like that. You guys are also studying. Huh? Everybody is getting second part. Siddhi very good. Bhargav, Ishika, Aryan. सॉल्व करते हो ना पक्का? भार्गव, भार्गव मुझे डाउट है, तू बेटा पक्का नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखता होगा. सीरियसली नो नेटफ्लिक्स भार्गव? ओके, पूजा इज टेलिंग मी बी पार्ट, अनीश आशीष इज टेलिंग मी सेकंड पार्ट. वेरी गुड. रंजीत इज आल्सो टेलिंग मी बी पार्ट. वेरी गुड, कीप इट अप. उत्कर्ष, हाँ ठीक है, आई वॉच, दैट्स गुड. लेकिन उत्कर्ष आई होप कि मतलब सारे काम फिनिश करने के बाद आफ्टर देन यू वॉच नेटफ्लिक्स, राइट? Anshu is telling me B part. Utkarsh, very good, very good. ठीक है, नहीं ठीक है यार, थोड़ा बहुत चलता है, but yes sir, I am बोला, yes right, right, ठीक है. उत्कर्ष मैं तो भूल ही गया था, right? Bhargav is our भोला भाला बच्चा, सीधा साधा, just like जलेबी. Okay, no. Rituraj B part, Ranjit. Okay, Vandita sir, which question you are talking about? Okay, Vandita, we are talking about question number 19. Question number 19. Okay, Shali, I will come back to question number 18. Oh, question number 18 we were not supposed to solve. Shali, question number 18 हमें solve नहीं करना था, मैंने solve करने को मना किया था, I think. Yes, Aryan, very good, very good. Keep it up. ऐसे ही साइन बोर्ड लगा दो, no disturb, no disturbance, no Netflix, no WhatsApp, nothing. I am fully dedicated to study for entire 2 years. Very good. Way of solving. Nikta is telling you way of solving. Yes, Bhargav. Very good. ठीक है. Netflix को Bhargav बम से उड़ा रहा है. That's good. Sir, A is the correct option of 18. Sisti, I don't know the answer. I will verify you the answer a little bit time later. Right now, even I don't have the answer because I have to talk to Milind sir. Okay, let's solve. Okay, so I can see everybody's response. So let's solve guys. Question number 19. See here. What is question number 19? Question number 19 is like this. The acceleration of a particle is given as p plus, that is 2d plus 2. See that 3d square plus 2d plus 2. This is the acceleration. और सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं. यही बताया था मैंने आप लोग को. If the particle starts out with initial velocity 2 meter per second. See here guys, what is the initial velocity 2 meter per second and what is the time? Time t is given as 0. Initial velocity 2 meter per second and t is 0. Then the velocity at the end of 2 seconds. He is asking us final velocity and किस time पे at t equals to 2 seconds. Here guys. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले acceleration is already given and initial velocity is given at t equals to 0 and they are asking about velocity at t equals to 2 seconds. तो ध्यान रखो मैंने क्या बताया था, x v a. फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर जाना है तो वी आर सपोज टू डू डिफरेंशिएशन, बट अगर बैकवर्ड डायरेक्शन जा रहे हैं तो इन दैट केस वी हैव टू डू इंटीग्रेशन. ओके शैली, ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं. यहाँ पे देखो ध्यान से. सी इफ यू वांट टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन then what we are supposed to do guys, just focus over here. Okay, acceleration is given and we are supposed to calculate velocity. So हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन.
acceleration, it is equals to dv by dt, and this is equals to 3t square plus 2t plus 2. Okay, क्लियर? अब देखो अगर वेलोसिटी निकालनी है तो मैंने क्या बताया था तुम लोग को? मैंने कहा था कि दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं. क्लियर गाइस? यहाँ पे देखो dv by dt है, तो dv को हम एक तरफ कर लेंगे, dt को हम एक तरफ कर लेंगे. क्लियर? So see here, how to write it down? I will write down dv equals to, this is 3t square plus 2t plus 2 multiplied by dt. See the expression. After this, what I will do, I will apply the sign for integration. dv equals to 3t square plus 2t plus 2 into dt. Let's apply the sign of integration. Here guys, okay. अब लिमिट को देखो ध्यान से समझ लो. अगर यहाँ पे हमने dv लिखा है, यहाँ पे वेलोसिटी की इनिशियल लिमिट आएगी, यहाँ पे वेलोसिटी की फाइनल लिमिट. If I have written dt over here, यहाँ टाइम की इनिशियल वैल्यू आएगी, यहाँ पे टाइम की फाइनल वैल्यू. Okay, what is the initial value of velocity? That is 2. What is final value of velocity? That is v. We are supposed to calculate. What is initial time? That is 0. What is final time? That is 2 seconds. See here guys. First देख लो लिमिट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? Okay guys, what is going on? Times. Okay. See here guys, limits में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो just let me know immediately. We have entire 2 years. I don't have any problem explaining everything again. Okay. So No problem. just let me know. Okay. dv को इंटीग्रेट करोगे तो see here guys, what will it will be v. This is v. This is 2 equals to. Now see here 3 times t square into dt. इसको ब्रेक कर लेते हैं. Plus twice integration of t dt plus what is this 2 times integration of dt. Okay guys, see अब देखो v को v से रिप्लेस कर देंगे तो v लिख दिया, v को 2 से रिप्लेस करेंगे तो -2 equals to. Now remember the integration. What was the integration of t square? T cube divided by 3. So 3 and 3 will get cancelled. Yes Shivani, do you have any problem in limits dv? Yes, tell me. Ashwani, all of us are waiting for you. Just let us know whether you are clear with limit or not. Okay. In dv limit, do you have any doubt? Okay. See here, Shivani, because you joined, मेरे ख्याल से लेट में आपने ज्वाइन किया है. मैं ये कह रहा था शिवानी कि अगर यहाँ पे आपने dv लिखा है तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जो आएगी ये इनिशियल वेलोसिटी होगी या फाइनल वेलोसिटी होगी. इन द सेम वे अगर यहाँ पे हमने dt लिखा है तो यहाँ पे टाइम की इनिशियल वैल्यू होगी और यहाँ पे टाइम की फाइनल वैल्यू होगी. That was the point. Clear? Okay. And after this we are applying limits. Yes, Shivani. Okay, sir. Shivani, is it clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, okay, that's good, that's good. चलो भाई अब आगे कंटिन्यू करते हैं. तो बच्चों अब देखो आगे क्या होगा. बस वही सेम चीज है यार, which we are doing every time. इस v को इस v से रिप्लेस कर देंगे, v हो गया भाई साहब. फिर इस v को 2 से रिप्लेस कर देंगे, माइनस साइन लगा देंगे. अब 3 टाइम देखो t स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे, फॉर्मूला क्या था? Our formula was t to the power n into dt. That was equals to t to the power n plus 1 divided by n plus 1. Now see guys, अगर ये स्क्वायर है, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो t cube by 3 आएगा. 3 and 3 gets cancelled. So finally we have t cube and the limits we have is from 0 to 2. Limits we have 0 to 2 plus t को इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा? t square by 2. वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा. So next is t square. Limits कहां से कहां तक जाएंगे? 0 to 2 plus twice dt का इंटीग्रेशन तुम्हारा किस में जाएगा? That will go into t. Limit will go from 0 to. Just say here and let's substitute the value v minus 2 equals to. देखो t को 2 से रिप्लेस करेंगे. तो guys वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं. t को हम 2 से रिप्लेस करेंगे. So it comes out to be cube minus 0 cube. 0 cube is also 0 plus t को 2 से रिप्लेस करो. So it will be 2 square minus 0 square plus see here 2 को हम यहाँ पे लिख देते हैं. t को 2 से करो. So it will be 2 minus 0. So this comes out to be v minus 2 equals to 8 plus 4 plus 4. So from here v comes out to be 22 meter per second. See again. अरे इसको एकदम और क्या इजी क्वेश्चन मत समझना बच्चों.
Integration already तुम्हारा IIT में आ चुका है. Take it seriously. This question appeared into IIT. और मैंने पहले भी तुम लोगों को बताया था कि whatever the questions we have marked in the last class, all those questions appeared into JEE. Clear? So take all these questions very seriously, and if you have any doubt, immediately let me know. Okay. Sir, Sure. Yes. sir, Shivani. Yes, Shivani. sir, जो DT we take there, उससे कोई डिफरेंस आता है कि नहीं आता है? ये जो DT है, Yes, sir. ओके, DT तो इंटीग्रेशन का सिंबल है शिवानी. एक्चुअली व्हाट हैपेंड, सपोज अगर तुमने यहाँ पे fx into dx लिखा है, तो ये fx कुछ भी हो सकता है. ये इंटीग्रेशन जो का जो सिंबल है, ये dx, ये इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है. लाइक अगर आपके पास इस तरह का फॉर्मूला है, समथिंग लाइक दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, और जब आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, देन dt आपका हट जाता है. जैसे यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n into dt, ये फॉर्मूला आ जाता है t टू द पावर n plus 1 divided by n plus 1. ओके शिवानी बेटा, लुक एट द बोर्ड. यहाँ पे देखो t स्क्वायर into dt, n की पावर कितनी है? 2 है. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखूंगा? t टू द पावर 2 plus 1 by 2 plus 1. मींस इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर शुड बी t cube divided by 3. तो ये t cube by 3 था, बट ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया तुम्हारा. Okay, sir. Sir, Okay. V is equals to 18. v equals to 18. v equals to 18. Okay. Yes, I sir. have done You something wrote wrong. that. 22. Okay, yes, right. All of you are right. Okay. So actually v equals to 18 meter per second. Okay, I think 18 meter per second is the right answer. Yes, guys, 18 meter per second is the right one. As I can see the answer key, 18 meter per second is the right one. Okay, Siddhi, very good. 18 meter per second. Yes, everybody is telling 18 meter per second. That's good. Okay, guys, remember, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपकी एनालिटिकल पावर उतनी ही अच्छी होगी. So that's why try to solve maximum number of questions. And I told you ना, सॉल्व होता नहीं होता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Okay, Tanish, I will try to guess the contact number, no problem at all. Which is the next one? Question number 20. Question number 20. Shwari is telling me question number 20. Okay. A particle moves along a straight line such that its displacement at any time t is given by s equals to t cube. 60 dpp. Number 3 is a little bit tough. Utna easy nahi hai, right? Okay. Nilaksha, I am coming back to question number 22. First, let me discuss number 20, and then I am coming back to question number 22. Don't worry. Okay. Okay, let's see. Question number 20. Okay, guys. 20 क्या कह रहा है? A particle moves along a straight line such that its displacement at any time is given by its velocity when acceleration is 0. So first, let us write down the question. X equals to, this is t cube minus 6t square plus 3t plus 4. Okay, guys. This was the expression, and they are asking the velocity of the particle when the acceleration of the particle is 0. चलो भाई ध्यान दो. Okay. Velocity of the particle when acceleration is 0. Guys, try to understand what does it mean. Sir, because of that wrong answer, I was going to ask how to do it. Okay, ठीक है. चलो कोई बात नहीं. Okay, see here, guys. What is going on? हमें velocity निकालनी है जब acceleration 0 है. So see here, guys, if displacement is given, then whether you calculate velocity or acceleration, procedure तो अपना सेम ही है. क्या बेसिक प्रोसीजर? अपना प्रोसीजर ये था कि अगर डिस्प्लेसमेंट है और वहां से वेलोसिटी निकालनी है, तो वी हैव टू डू द डिफरेंशिएशन, और वेलोसिटी से अगर एक्सेलरेशन निकालना है, देन अगेन वी हैव टू डू द डिफरेंशिएशन. क्लियर गाइस? सो सी हियर, जस्ट लुक एट द बोर्ड. फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज dx by dt.
क्लियर? अच्छा, अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। वेलोसिटी कम्स आउट टू बी टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 6 से मल्टीप्लाई करो माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चों 12t। ठीक है, 3t को जब डिफरेंशिएट करोगे इट विल बी 3 और 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 4। तो यहां पे देखो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अपना आ गया 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। क्लियर गाइस? अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी का अपना एक्सप्रेशन आता है 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3। नाउ सी इफ somehow we know about time, अगर हमें टाइम की वैल्यू मिल जाए किस टाइम पे, जब एक्सेलरेशन 0 है, तो उस टाइम की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। सो व्हाट वी विल डू नाउ, we will try to find out the value of acceleration and we will see like at which point the value of acceleration is 0। clear? okay, तो एक काम करते हैं, acceleration निकालते हैं। what is the formula of acceleration? This comes out to be dv by dt। so I will write down d by dt, what is the value of velocity, that is 3d square minus 12t plus 3। okay, अब देखो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t मल्टीप्लाइड बाय 3 कम्स आउट टू बी 60। t का डिफरेंशिएशन 1 दैट इज -12 और 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तुम्हारा 0। सो व्हाट इज आवर एक्सेलरेशन, आवर एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 60 -12। दैट्स हियर, once we are calculating acceleration the value of acceleration is 60 -12। ये आ गया अपना। now what do we want, we want like at what time the value of acceleration is 0। तो एक काम करते हैं, इस acceleration को 0 कर देते हैं। ओके, इसका इस प्रोवाइडिंग में आंसर, acceleration जब मैंने 0 कर दिया, यहां देखो टाइम वैल्यू वाली कितनी हो गई 2 सेकंड। जैसे ही हम acceleration गैस करते हैं t की वैल्यू अपनी आती है 2 सेकंड, मींस t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे acceleration की वैल्यू 0 है। और हमें भी वेलोसिटी निकालनी है किस टाइम पे, जब एक्सेलरेशन 0 है। सो व्हाट वी विल सी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 0। क्लियर गाइस? सो व्हाट वी विल डू, जो भी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है इसमें हम t की वैल्यू कितनी रखेंगे 2 सेकंड। क्लियर गाइस? व्हाट वाज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, दैट वाज इक्वल्स टू 3d स्क्वायर minus 12t plus 3। So we want to calculate velocity at t equals to 2 seconds. So 3 into 2 ka square minus 12 into 2 plus 3. So this will be equals to 12 minus 24 plus 3. What is this value? Minus 9 meter per second. See here guys, the velocity of the particle comes out to be minus 9 meter per second. Okay, everybody just look at the board, have a good look and let me know if you have any doubt. Guys, all the students look at the board and tell me if still if you have any doubt। प्रॉब्लम देखो अपनी बस एक ही कंडीशन है कि अपने को हर रोज एवरी डे वी आर सपोज्ड टू सॉल्व 5 to 10 प्रॉब्लम्स मिनिमम इन फिजिक्स। ओके सिस्टर, दैट्स गुड, वेरी गुड। चलो भाई, ओके यस हर्षल, ओके सर, ओके यस हर्षल, एवरीथिंग इज इजी। ठीक है, देखो मानव जीवन में जो भी चीज मिल जाए वो इजी है। क्लियर? जो चीज ना मिले वो टफ है। there is nothing easy or tough here guys, everything which you are able to understand that's easy, comfortable। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती that is tough। okay guys, yes Nikita, that okay, Nikita is giving me a thumbs up, right? okay ठीक है, so tell me the next question guys। अरे तुम लोग फटाफट बताते नहीं, लेवल लेक्चर होते होते सुनना शुरू कर देते हो क्या तुम लोग? नहीं ना? Anisha is also giving me thumbs up, very nice Anisha। Bhargav always triple thumbs up। Bhargav is always charged, he has so much energy, right? okay अरे भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो यार तुम लोग। ओके थम्स अप आई कैन सी, बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके गाइस, next one, okay 23, Ishika is telling me next question is question number 23। चलो भाई, okay and it's before 23, it's a good time to say what is question number 23। let's see,
Oh, question number 23 we are not supposed to solve right now. Okay, 23 solve कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. Guys, just let me know whether मैंने question number 23 solve करने के लिए कहा था क्या? No, sir. Yes. Ishika, in next class we will do question number 23. Let me come to the concept of relative motion and then I will explain you question number 23. Okay, okay. So I think you guys are telling me about question number 22. Am I right? Okay, Harshal is telling me 22. 10 seconds. Okay, Siddhi, very nice. You solved this question number 23. That's nice. That's nice. Very good. देखो question number 23 we can solve in Earth's frame of reference as well as अगर हम relative motion से solve करते हैं तो बहुत easy हो जाता है. Okay, I can see. Okay, you guys are very fast forward here. फटाफट solve कर लेते हो तुम लोग तो. प्राजक्ता, अंश, सौम्या, मुशफिक. Okay, okay. Okay, so I can see so many students have already solved question number 22. But let's do the discussion as we promised. Okay, guys, see here. What is going on? Question number 22 देखो क्या कह रहा है. Okay, question number 22 is something like this. Question number 22. Let's see question number 22. Okay, the position x of a particle varies with time t as x equals to at square minus bt square. The acceleration of the particle will be zero. See here guys, I think अब तो ये इस तरह के क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ चुके होंगे. Like कैसे इनको अप्रोच करना है. X equals to at square minus bt cube, and they are saying acceleration of the particle will be. Is asking acceleration is zero at what time? See here guys, very simple. भाई क्या करो, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो और उसको बच्चों जीरो कर दो. अरे सिंपल है ना भाई. अगर हमें निकला है कि एट व्हाट टाइम एक्सेलरेशन इज जीरो, सो व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड मेक इट इक्वल्स टू जीरो. क्लियर? सी हियर गाइस, क्या हो रहा है देखो. सबसे पहले निकाल लेते हैं वेलोसिटी. व्हाट इज द वेलोसिटी? दिस इज इक्वल्स टू dx by dt. क्लियर? सो दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस at minus twice bt square. डिफरेंशिएट अगर करोगे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी dv by dt. तो व्हाटएवर एक्सप्रेशन वी हैव इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं. 280 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2a और 3bt का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -6. This is the value of acceleration. And what we are supposed to calculate? We are supposed to calculate the time at which acceleration is zero. तो हम लोग क्या करेंगे? जो भी acceleration की वैल्यू है उसको जीरो कर देंगे. Okay, Shivani, I will come back to question number 4. No problem at all. अब देखो, इसको हमने कर दिया 0. So from here, I can write down t equals to 2a divided by 60. Do the calculation, and our final answer will be t equals to a divided by 3. See here. If we do the calculation, time की क्या value आ रही है? Time value आ रही है a divided by 3b. Okay, everyone who had a little bit confusion in this question, just see. Okay, guys, just look at the board and let me know if still you have any doubt. Okay, no doubt at all. Okay, that's good. That's good. Okay, guys. So in sheet number 2, I hope all the doubts has been clear. Okay, Ishka, very good. In sheet number 2, I can see 50. Okay, users are less. भैया 6-7 बच्चे कहाँ गायब हो गए? आधे तो लेक्चर के बीच में ही गायब हो जाते हैं. Utkarsh, that's right. Clear. Okay, ठीक है. So I hope sheet number 2 is clear. Okay, Shivani is telling me question number 4. What is question number 4? Okay, Shivani, see an electron starting from rest has a velocity that increases linearly with respect to time, that is given as equals to kt, where k is 2 meter per second square. The distance traveled in the okay, Shivani, after that, this question can be solved very easily. देखो, Sir, what is Shivani, not see clear? here. Electron. Okay, Mukul, audio is not clear. Voice is breaking. Okay, guys, just hold on for a second. Okay, just tell me whether it's okay or not. Still, it's breaking.
Yes, sir. Okay, right now am I audible clearly? Let me know whether I'm audible. I'm not audible. Okay, I'm not audible. Okay, what about right now? Okay, blur, that's okay. Right now I have unmuted कर दिया है. अभी देखो जरा, it's breaking. Still, okay, it's breaking. तो एक काम करते हैं, let's do one thing. Question number 04 solve करके फिर session end कर देते हैं. Clear? Yes, sir. Okay guys, just manage a little bit. Question number 04 solve करते हैं and then we will end the session, no problem at all. बाकी फिर next class में यार problem मैं solve करता हूँ. Okay? Just manage for question number 04 for Shivani because she had a little bit doubt in question number 04. See यार यहाँ पे देखो क्या दिया गया है. V equals to is given as k. Okay. Where k is given as the value of k is 2 meter per second square. See here guys, k is given as 4 meter 2 meter per second square. So from here we can say v equals to 2t. Yeah. अगर v की वैल्यू 2t है तो what about acceleration? Acceleration is equals to dv by dt, so it comes out to be 2. तो शिवानी सी है, वेलोसिटी अपने को kt दी गई थी या वेलोसिटी 2t दी गई थी. Acceleration we were supposed to calculate, so we did the differentiation and the value of acceleration comes out to be 2. Now see here Shivani, what is going on? The value of acceleration is a constant. So if, see here guys, we have a very important result. If when we differentiate this, the value of acceleration comes out to be constant. And if acceleration is constant, what does it mean? It means we can use equations of motion. Clear guys? Now this question becomes very easy. An electron starting from rest, u equals to 0, has a velocity that increases linearly. Okay, the distance covered in the first 3 seconds. See here, Shivani, u is 0, acceleration is 2, x we are supposed to calculate, and time t is given as 3 seconds. So see here, Shivani, as well as Harshal. Harshal, बेटा last class में आपने पूछा था कि कौन सी equation कब लगाते हैं. See, I have simply written the data. What is the data? X, U, A, and T. Which equation we are supposed to apply? X equals to ut plus half at square. Simple. Okay, Shivani, I hope that's clear to you. Yes, sir. ओके वेरी गुड वेरी गुड. तो बच्चों चलो आज हम लोग एक काम करते हैं, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश कर रहे हैं. बट रिमेंबर मेन मोटो अपना यही है टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. क्लियर? तो ऑल द स्टूडेंट जिनके पास एचसी वर्मा है, कल की क्लास में मैं न्यूमेरिकल स्मार्ट कराऊंगा एचसी वर्मा के. ओके, और यू आर सपोज टू सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15. अटेम्प्ट कर लेना. उसमें जो ग्राफ के क्वेश्चन है, याद करना कुछ क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर बेस्ड हैं. The questions which are based upon graphical analysis, those questions you are not supposed to attempt. Clear? ग्राफ के क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, बाकी सारे अटेम्प्ट कर लो. ओके सर, फर्स्ट इक्वेशन नहीं अप्लाई कर सकते क्या? ओके यार देखो, अपने को x निकालना है हर्षद. इन फर्स्ट इक्वेशन वी हैव v इक्वल्स टू u प्लस 80. अगर आप फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो उसमें x है ही नहीं, तो कैलकुलेट कैसे होगा? क्लियर? Yes, Sanish, just talk to. Okay, guys, I will provide you my contact number also, no problem at all. Maybe in next class, just give me a little bit time. Sanish, but I will provide you my contact number so that you can. Okay, okay, guys.
Okay, guys. So that's all for today. Chalo bachcho, bye bye. Take care. Yes, Bhargav, I will provide you my contact number. No problem at all. So we need to solve 15 questions from HC Verma or from DPP 3. No, 15 questions from HC Verma. Not with DPP 3. DPP 3 में जितने mark किए उतने sufficient है. Okay, Okay, sir. Utkarsh. Bye bye. Bye